now we started. Okay, welcome friends. We will now we'll start the balance C signature series. Now this we come to the Che Guevara. He is a very famous leader of liberation. सर थोड़ा आवाज जरा जोर से सर. आवाज जोर से एक मिनट आवाज अभी. He is a famous leader and revolutionary. Rosero Argentina से Argentina में है. Just see, he is a leader, has a very strong drive. This fellow has so the pressure is a very pasty pressure, and the C and stroke goes 2 times with the in between the H. So this is the concern of the social, and has a very blunt stroke. So and the underscore is basically half done because this fellow has been died due to his fight and all those things. So he does not fulfill the full life. So and he enjoy the success for a part duration of his life. If you see, this fellow is a very good player and passionate about poetry especially, and he takes care of his fellow members. And Castro revolutionary plan was assault on Cuba from Mexico via the Granma. Guevara is a very harsh disciplinarian who sometimes shoot the defectors. This fellow is basically a freedom fighter, and sometimes the fellow who plays against he will simply shoot. That way he is a very actions are very controlled, but sometimes lethal also. Even though he is a very plain guy, but he doesn't compromise the quality, and the feeling is so strong for the national things. He doesn't tolerate the enemy and the defectors. So he simply shoots out the defectors. So Guevara also viewed as a role of commander, as one of teacher, entertaining his men during breaks between engagements. So this is the basically our sort of role model for a lot of Latin American people for their revolutions. इसका राउंडेड फिंगर क्या इंडिकेट करता है? इट इज नॉट शार्प, थोड़ा सा राउंडेड है, तो वही है, आर्टिस्टिक है. ये जो लिखा ना, Guevara is a very disciplined, but same times he is a very good commander, teacher, entertaining his men and breaks his between in the engagement. He is a good poet also. She write poetry, and especially he was passionate about poetry. You see, it is there already there in the history. You can see that I've already highlighted this with red. And this Chester Bennington, basically just see this Chester Bennington. C is a very left word. We started with left word because this fellow has a victim of sexual abuse during child time by a male friend. So because of that, he has a negative trait. So the C lifted C has a left slant. Started with the negative things and his own way of suppressed feeling, and that is what the child abuse is basically. Because if you see, the C is crossed 2 times by the letter H, which is not completed as such. And C and stroke also has gone up, which shows the concern of social environment, but it is having with lot of crosses and crossing. Yes, ma'am, बोले. ये जो मैंने सिग्नेचर है ना, ये ग्रुप में शेयर की थी कि कंप्लीट ये जो बी जो पीछे से जो आ रहा है ना, वो कंप्लीट स्ट्रोक है. ग्रुप में शेयर किया था इसका सिग्नेचर. हाँ जी. तो थोड़ा सा जो वहाँ पूरा कंप्लीट रहा है. Because this fellow, because of problems, and see the baseline goes haywire. So this fellow also has some emotional
struggle give millions, and since that someone is very difficult to understand, it is already there. And but same time, if you see the speed and pressure and rhythms are more. So if you see this fellow has a 3-octave tenor vocal range, so very good singer, and especially lowest note G2 पे ये बहुत अच्छा गाना गाते थे. So this is how its personality has been reflected in the, and the B bottom bar has a gap here. So so gut feeling, but because of all the negative experience, this fellow doesn't has a satisfaction, basically unfulfilled desire. तो इतना बड़ा है जो इंफिनिटी के ऊपर से वाला वो भी स्टार्ट, तो वो क्या होगा, उसका मीनिंग क्या होगा सर? No, actually it is a part of B. और कैसे बनाया, क्योंकि इसका स्ट्रोक पता ही नहीं लग रहा. इट इज अ सॉर्ट ऑफ मिस्ट्री सॉर्ट ऑफ थिंग. बी का ऐसा लग रहा है कि वो इन्फिनिटी का पार्ट है. कई बार लगता है कि वहां पे स्टॉप होकर बी को बनाया उसने. बट डेफिनेटली द श्योर पार्ट इज द बी का जो एंड स्ट्रोक है वो टच नहीं हो रहा है, इसमें गैप है. तो द एंड स्ट्रोक इज नथिंग बट गट फीलिंग. सो in spite of all those things, the trouble and tensions, this fellow doesn't have a satisfaction. So unfulfilled desire, basically here. Strong urge to address the issues, reconfirming practical aspect of concern and current affair. Unfulfilled desire. And this is a basically meaning of that person signature. Now this is Colre Grace Mortage. If you see, there is a letter C is a very full blown circle, so very good creativity. But there is, but within that there is a C, H, and L. So there is a lot of things are inside. So this fellow is a definitely hide and give the surprise. So this, and you can see red में लिखा हुआ C surprise basically her role as a hit girl in for this kick-ass film and the game. And this fellow also wants a horror, because horror is nothing but something sudden surprise basically. So this fellow has a very good success role in a supernatural horror film. I mean teen horror 2005 में. So she wants to surprise. Surprise element is there, and with the love also. So, but actually he is a loving guy, but she wants to surprise everybody, and accordingly she does the things. इसमें मिस्टीरियस अननोन का क्या रीडिंग है? हाँ जी, मिस्टीरियस अननोन थिंग, उसका ट्रेस कौन सा है? एक्स एंड अननोन. वही हॉरर में वही है, सरप्राइज तो अननोन से ही आएगा ना. आपको नोन होने के बाद सरप्राइज नहीं रहेगा ना फिर. अच्छा, it is supporting traits of horror basically. Okay. डिजायर टू बी ऑन स्टेज वो हार्ट शेप से पता चलेगा सर? हाँ, क्या डिजायर, क्या डिजायर मैंने वो लेटर हार्ट एम जो बनाया है उसने वो हार्ट शेप बनाया है. हाँ, हार्ट शेप. मतलब she is basically not that sort of lady. She is a plain simple guy. She begins acting. Clear लिखा. Mortage has done voice work for video games. In played young lady. When asked the actor why she lends the gravitate towards playing darker double side, Mortage responded that she has such a happy family life and find it challenging to play characters who are significantly different. So ये इसका शौक है actually different चीज करने का. ये उसमें है नहीं, ये शौक है इसका. हाँ, वो that is what. हाँ, इसलिए जो हार्ट शेप अच्छा बना, सुंदर बना हुआ, तो she has a very good family life, but she wants to give the surprise to others. Because even if you see the heart shape is the C ka extension, which is environment or social things. Not जो heart shape है C पे कहीं attach नहीं हुआ, left side में नहीं या top में कहीं नहीं. So that position also matters. It is not belongs to him. The X and O, this horror and the surprise element is not belongs to her, but for others. सर सी के अंदर जो H दिख रहा है उसमें I भी है ना?
IVI, I yes. don't get it. CHL, हाँ CHLOE है। वो OE की अब यहाँ पे ग्रेस मॉर्टेज में पता नहीं क्या किया है, बट डॉट लगाया हुआ। Again, this dot is again the mystery, but because things surprise element. Because dot is not there anywhere. So dot means he wants to ensure people has to be get surprised basically. So the dot is basically ensuring the hiding trait. This Catherine Zeta-Jones, actually I don't find this person's data, so I have downloaded, but I have not analyzed, so it is blank. I put it blank actually. Christina Aguilera. Again, here if you see the heart shape is on the C itself, stem itself. So and with crossing. So there is the love part is there, very leading, but and left side means it is by birth or by inbuilt feature, but with the crossing means some stress. He has own vision, stress with father and challenging childhood. The C जो कनेक्शन आ रहा है, अब ये देखिए जो टॉप में हुक आया है यहाँ पे, ये चाइल्डहुड का है. Okay, and challenging childhood. Has a strong drive and efforts to overcome the situation. Inherited creative talents to deal with emotional disturbances. So these are the crossing is nothing but emotional disturbances. So somehow she's coming out, even though if you see the A, Aguilera A is going far left and coming out very strikingly. So in spite of all hurt and all, she overcome and moves ahead in the life with a great energy. You can see this, her parents are divorced when she was 6 years. So this is all childhood troubles there. And his father is also physically and emotionally abusive to her. So this is all his background you can see. And now this comes to Charles K. Cow. Cow is a basically electrical engineer. He is basically father of our fiber optic network. So he is Nobel laureate for his invention of fiber optic network. If you see here, the C has a dagger stroke here. So dagger stroke basically challenging. He wants to challenge the thing. So he has experimented so many combination of fibers and light and attenuation, and ultimately with the team, he succeeded to create the fiber optics. So this is dagger is a basically challenge. He loves challenge. But same times, dagger is in initial stroke in the first letter. It becomes basically it becomes a lower case. So this fellow is become very modest guy that way, and that's why he is working with lot of teams and sharing, caring, and because of sharing, caring, and teamwork, you can see there are the connections is very good, and the high intellect level shows by the माइक्रो मिडिल जोन. बहुत ही बारीक चीटी जैसे जो मिडिल जोन है उसको एनालिटिकल स्किल बता रहा है. एंड द लव लेटर के बेसिकली इफ यू सी दिस लव लेटर के उसका जो ग्लिफ स्ट्रोक जो बोलते हैं, जो के का जो ऊपर से आ रहा है बहुत बड़ा है और नीचे वाला छोटा है. सो इट इज अ वन साइडेड लव. हेलो, कुछ बोल रहे हैं मैम? नहीं सर, ठीक है, ओके. के बारे में पूछ रही थी पर आपने बता दिया. पर हाँ जी, ठीक. नंबर ड्रॉ किया है उसका क्या है सिग्निफिकेंस? एक में इसमें अच्छा साइड में नंबर नहीं, वो चाइनीज है एक्चुअली. ये चाइनीज है बंदा. दिस फेलो इज चाइनीज बेसिकली. तो वो चाइना में कुछ लिखा हुआ है, नंबर नहीं है वो.
वो चाइनीज लैंग्वेज स्क्रिप्ट है। तो जो स्मॉल लेटर्स के बारे में बताया थ्रेडिंग लाइक है, तो उसके बारे में शेयरिंग एंड क्या बताया, शेयरिंग एंड केयरिंग? एक्चुअली जो स्मॉल लेटर से कनेक्टेड है तो टीम वर्क है, कनेक्शन है, कनेक्शन मींस टीम वर्क बेसिकली. सो दिस फेलो हैज invented through his team actually. So if you see here in the, you can say connected, the members including the cow together with his new team members, including T.W. Davies, M.W. Jones, and C.W. Wright. So because even though he is a very intellectual, but still he is open to teamwork. So that is what the connection basically. Connection is a teamwork. And micro means intelligence. So both things are connected this way. Okay. Thank you. Okay. Camilla Parker Burns. Here if you see the, देखिए बाकी चीज तो हम सी का हम रिपीट नहीं करते हैं. जैसे अब इसमें जो मेजर इश्यूज है इसमें आप देखिए एल है कैमिला का, एल में ये ब्रेक हो रहा है. कोई भी जो स्टेम में नॉर्मली ब्रेक नहीं होता है. दिस ब्रेक इज बेसिकली टेलिंग अबाउट द मेडिकल हेल्थ एंड स्पेशल बोन मैरो, sorry, bone mass. So this fellow is suffered from the genetic component characterized by low bone mass and micro architectural deterioration of bone tissues. And because of this bone, there is a, just see, there is a hook, kicks, jerks, and the pressure is comparatively, pressure is very heavy. And even if you see in the C here, there is the smoothness in the lower zone is good, but here at the middle part, that the same level at the crossing here has a little jerk. The speed is not that good. So this is all reflecting is a medical issues. Okay. हाँ जी, हाँ हाँ वो W बना हुआ है. तो एक्चुअली इसमें जो टॉप जो पीक्स आ रहे हैं ये इसका इंटेलिजेंस मतलब जो थर्स्ट है, नॉलेज थर्स्ट, जितने भी इसके जो एम के जो पीक्स हैं बहुत पॉइंटेड हैं. तो ये नॉलेज थर्स्ट है, नॉलेज थर्स्ट बताती है. कंसर्न कैट ब्लैंकेट का भी ऐसे कुछ डाटा ज्यादा मेरे को मिला नहीं, कंफर्मेशन डाटा नहीं मिला, इसलिए मैंने इसको, अच्छा सिग्नेचर था बट मैंने किया नहीं इसको. कैरा डेल्विक ने ये जस्ट सी, दिस फेलो हैज अ सी, इफ यू सी देयर इज अ C, A and R. Basically if you see the baseline goes haywire here actually. So this fellow has a definitely a mental health issue. So she fought the depression at the beginning age of 15. And see, if you see here, the circle, the part of C is become a linear and not hook, but prelim hook sort of thing. So this fellow has a problem with mother relations, and because his mother is a drug addict, and her medical health also, if you see, because of baseline, so mental health issues. So she also has a ADHD. But this is all things are reflected here. And if you see the D, letter D is reflected as a R sort of thing. And here also the D belongs to his parents, and the D letter crossing with the top up. The topper is again a mother thing. So the mother relation is having some issues. So definitely again same thing is repeated because her mother is addict and pansexual. And she was हेलो बना रहा है या फिर एक बर्ड लाइक शेप बना रहा है, उसका क्या मीनिंग है? हाँ वो एक्चुअली वही है, bisexual and pansexual traits are there for her mother basically. ये जो AR, हाँ AR जो लिखा है बेसिकली इसमें बेसलाइन जो है A खत्म हो रहा है और R को यूज कर रहा है एज ए.
So basically it is a negative spacing, and but same time it is having also, if you see and are the simplification stroke, but again the baseline breaks actually. And C का जो n stroke आगे जा रहा है, it means this fellow has a concern about social concerns as well as tensions, because the letter है left हो गए. सर हैंडराइटिंग से ये भी पता चल सकता है क्या कि पर्सन इज होमोसेक्सुअल और नॉट? या ये सब चीजें पता हो सकती हैं. ओके सर. बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे इसमें, हम देखेंगे. अभी जैसे उसका ही देखा था हमने, जो ट्रांसजेंडर वाला एग्जांपल था हमारा, कल हमने दिया था, उसमें था देखिए. और एक लेडी का भी था, वो with the same sex she enjoys the more pleasure rather than opposite sex. So this is, they are already there. If you just go through, you will find it. Now it becomes Charles Dickens. You see the C becomes like a 8. The letter C is basically, if you see, it goes downward and again coming up and crossing the same. It means again there is it is a childhood issues, and you can see that Dickens left the school at the age of 12 and work in a boot blacking factory when his father was incarcerated in a debtor prison. So because of this trouble, the knots become very big, and even the C at upper stroke has a tension. So because of he is working and mother is not supporting, so he worries about the mother. So because of that, hooks are there. But otherwise, this fellow is a great writer and very practical, and the quality is ultimate because the legibility is superior, and Middleton emphasis is very good. Again, his father's trouble is shown. The Dickens, his father name. If you see the Dickens, D in the down lower side, there is a hook. So this is again reconfirming the same father related issues and stress. D bottom has a small angular stroke here, hook sort of. And he described the things because of his intellectual skills and learned academic. He's a very good academician. Because of that, he portrays the clear pictures, and that's why he is a very good writer, and to the scale of Shakespeare. Again, yes, but ये जो underscore है, कोई किसी को काट नहीं रहे, and they are basically making a loop, and especially parabolic loop. It means full of energy. Whatever he does with the great connectivity, and it doesn't open loop kabhi nahi ho raha, and cross bhi nahi ho raha. So this fellow is reconfirming and building the stories basically step by step. High ability to infuse high energy, basic rights and reforms. This is what basically underscores with parabolic ends. Here Charlie Hunnam. If you see here Charlie, the C का जो लेटर ऊपर वाला है वहां पे तो कनेक्शन ज्यादा है, पर नीचे वाला छोटा है. तो नीचे वाला जो छोटा है फादर का करेगा, क्योंकि स्टार्ट ऊपर से हो रहा है, तो ये स्टार्ट वाला मदर को डिपेंड करेगा, नीचे एंड हो रहा है तो फादर का, बट ये छोटा है. सो सोशल कंसर्न नहीं है, बट द कंसर्न विथ फादर है. So, and definitely he said that his mother did a very great job being a single parent. So
whatever reason, जो भी father से बनी नहीं तो single parent रही इसकी था. But if you see the pen pressure is good, so his personal stamina is good. So he played the rugby, football, and classmates. And Honam may suffer from dyslexia as well as fear of germs and dirt in general. Just see the सर लोअर baseline. जोन में कटिंग का क्या मतलब है और क्लब स्ट्रोक बहुत हेवी है? नहीं, लोअर जोन कटिंग नहीं है, ये एच है. अच्छा हुन्नम एच का एच है. लोअर ओके जोन सर, नहीं है. हाँ. लेकिन इसका जो क्लब स्ट्रोक है ना, मतलब एच का जो कटिंग है वो उसका क्लब स्ट्रोक काफी हैवी है, तो उसका क्या काफी heavy मतलब है. होगा? वो ड्राइव है. जब भी कोई भी स्ट्रोक ज्यादा लंबा हो रहा है तो ड्राइव पे जाएगा. तो दैट्स व्हाई because of this his energy and everything, he is a very good theater personality and a very good stamina to do the things for his work will be remembered long time. Okay, for long time. So, and because the baseline, if you see, is going up and down. Basically, if you see, if you just go through the press the baseline, it goes haywire. So it is a mental health issue, and this fellow is suffering from dyslexia as well as fear of germs and dirt in general. सर इसका आई डॉट और आई के बाद में जो ई है वो डॉट बन गए हैं, इसका कोई हाँ. significance है? चार्ली ये जो इंक फील्ड है तो सेंसुअल हो जाते हैं. बेसिकली सेंसुअल हो जाते हैं. वेरी सेंसिटिव है. So libido influence health issues in the head is an impulsive and direct because the linearity is more, so very impulsive बंदे बहुत जल्दी sensitive ज़्यादा over sensitive रहेंगे. And because of those sensitivity is very high, so this fellow has a lot of lot of this क्या बोलते हैं, डर्ट एलर्जी एंड ऑल. एलर्जी एंड डर्ट का प्रोन हो जाते हैं. वो भी है इनको यहाँ पे दिया हुआ है इसमें. सर जो एच का जो क्रॉस आ रहा है, हाँ मतलब जी. क्लब स्ट्रोक आ रहा है, वो एकदम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, उसका कुछ हाँ मीनिंग है? तो हाँ, इसका मीनिंग वही है कि दिस फेलो हैज ही नोज द ग्राउंड रियलिटीज में. उसको कैसे उसको इंटेलेक्ट से करके उसको कैसे ड्राइव करना है, उसको जो ग्राउंड रिसोर्सेज है उसको कैसे यूज करके उसको आगे तक लेके जाने का, टू गिव द न्यू हाइट्स एंड न्यू डायमेंशन. And that is what is USP. Okay, sir. Thank you. Okay. Now this Carla Gugino. Again इसमें जो लेटर सी का ऊपर में जैसे यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा छोटा है, but there is a big knot and very stress is there, but it is not very big जो कल हमने देखा था उसमें. So this fellow, if you see, the C is a very bigger. So this fellow try to live larger than life. Childhood and parental gaps are there. And G, if you see, it is a short closed. So it is a attenuated sex drive. So she is not able to do the full enjoyment in the sexual relations. And if you see these traits are simply supported by her parents, separated when she was 2 years old, and after which she travels between her father and half brother Carl Jr. home at Sarasota. Okay. Now it comes to कई लोग, हाँ परवेज जी ने बोला था हम अपने इंडियन लोग का नहीं करते हैं. देखिए मेरी कोशिश करी थी, मैंने पहले ही लिखा हुआ था. चिरंजीवी जी हमारे, तो चिरंजीवी जी का देखिए सी टोटल क्लियर है, बट यहाँ पर जो नीचे वाला एंड स्ट्रोक है थोड़ा कम है. सो ही इज नॉट दैट वे सोशली हेल्पिंग नहीं है, कंसर्न नहीं है, बट अपने पर्सनल लेवल पे के लिए है, बट एंजॉयज. एंड
but drive is very good. If you see the love, and there is a heart shape here, and being in hero, romanticism and all those things, the love, again the traditional way, because E is again here. If you see कल हम जो E देखा था वो नीचे डाउन स्ट्रोक में चला गया था लोअर जोन में, यहाँ पे देखिए अप में आ गया, और ये ट्रेडिशनल वे है एंड इट इज अ ह्यूमन शेप बता रहा है। तो डेफिनेटली वो जो फिल्म का जो रहता है हीरो हीरोइन का और बाकी जो लव सीन्स ये ज्यादा किए हैं, एंड those things are reflected here, and again reconfirmed by the little heart shape here. And basically this is also, basically this is not heart shape, it is a basically I dot of CHI, one I dot. Actually there is a 3 I dot, but here it reflects 1 and 2 whole only here. हाँ जी, लाइन बनाई है बीच में सी के बीच में से जो लाइन बनाई है, ये स्टार्टिंग में एक छोटा सा हुक जैसा है एक अपर में, यहाँ नहीं, हाँ ये जो लाइन सी के अंदर जो लाइन है, सी के अंदर ये यहाँ पे छोटा सा हुक है। हाँ तो this fellow is not willing to share the things for society. She wants to enjoy basically to the self, not the society. अपर का बड़ा है, नीचे का थोड़ा छोटा ही जा रहा है बेसिकली। कायदे से दोनों बराबर होना चाहिए, यहाँ पे पूरा गोला होना चाहिए। ये गोला भी शॉर्ट हो गया, इसका आप देखेंगे, देखा जाए तो ये जो गोला का जो रेडियस है सडनली फ्लैट लाइन हो गया, शॉर्ट क्लोज हो रहा है, सिमिलर स्मूथनेस नहीं आ रही है। एक लाइन जो बनाई है सी को काटने वाली, इसमें छोटा सा अपर की बात कर रहे हैं, सी के अंदर से जो लाइन आ रही है। आवाज क्लियर नहीं हो रही है मैम, आपका आवाज पर से प्रॉब्लम है। सर सी के अंदर जो लाइन है, जो बड़ी सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, जिसके ऊपर डॉट है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ मैं वही बता रहा था, वो जो एक्चुअली आर आई का डॉट है बेसिकली एक, और वो हार्ट शेप में है। तो अगेन उनका जो क्या बोलनी चाहिए, लव एंड एंजॉयमेंट को री इन्फोर्स कर रहा है, जो लव लिखा है वो सेम चीज को री इन्फोर्स कर रहा है एंड स्क्रिबल कर दिया एंड में। तो बिकॉज दिस फेलो इज अ वेरी गुड एक्टर, so he has to follow the things, not he is not giving the quality dialogues and all those things. He simply has to follow, and because of that there is a scribble things are there. So she may be even telling dialogues very fast, action is very fast. सर साउथ इंडियन मूवी में होता है ना, डायलॉग भी फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है। हाँ तो वो वही चीज यहाँ पर रिफ्लेक्शन, एक्शन भी है क्योंकि ड्राइव है तो एक्शन भी होगा। इसके नीचे जो फ्लरिशमेंट है, नेचर के नीचे जो फ्लरिशमेंट है, मैम समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे। अनुपमा जी आपकी आवाज में ना बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, ऐसे लग रहा है पीछे कुछ चल रहा है। हाँ पीछे की कुछ पिकअप कर रहा है। सर लास्ट में जो छोटा सा अंडरस्कोर है, हाँ एक्चुअली वो आप देखिए डायग्राम है, डायग्राम बनाया, वो एक फूल बनाया हुआ है बेसिकली। ध्यान से देखेंगे तो एक 1 2 3 3 उसका एक फूल बनाया हुआ है उन्होंने, just a flower, again reinforcing the love and sharing the love aspect of the personality basically. Now this is Christian Pulisic. He is a very good sportsman. Again यहाँ आप देखें जो triangular है तो constructive है, but इनका जो C है बहुत आगे जा रहा है। So this fellow is a concern of social environment के लिए ज़्यादा सोचना। Again surprise element भी है, and the P is having a parabolic thing. So again
this fellow has a lot of energy, but not a bad taste. Not a bad taste. And the P is the family name, which is basically he gives more important to family. So the first name C is limited to C only, Christian, but Pulisic is the surname which he gives more important to the family. And I dot missing है लिखा हुआ, तो I dot missing से वही absent I dot means kind of fear, basically God fearing. So this fellow has excellent teamwork, stamina, energy, and controlled actions. Christian Horner. Again यहाँ पे hook बन रहा है, but not very sharp hook, very big hook. C. And H, if you see, the H has the end stroke goes up and it won't come down, but it again carried away to make a R. And there is a wave stroke, then again there is a curve, pointed curve, and the E is a open E. So very good listener basically. So large curvy C with small hook, tight packed letters, scribbled writing, pen flick underscore. Underscore में जो pointed pen flick उसको बोलते हैं, जो pointed underscore होता है. So this translate into the patients ready to learn and share, pleasure to perform, work to close proximity, and fighting spirit. So this is how the personality converts all these traits. पेन फ्लिक अंडरस्कोर का मतलब क्या सर? हाँ, पेन फ्लिक का मतलब जैसे भाला टाइप का रहता है, देखिए पतला होता जाए. हाँ, तो ये जो है, ये बंदे लोग फाइटिंग स्पिरिट, हाँ फाइटिंग स्पिरिट है, मतलब सरकास्टिक हो जाते हैं ये लोग, तो वो फाइटिंग स्पिरिट में आ जा रहा है. एंड सेम थिंग, हाँ, दैट इज व्हाट. थैंक यू. Okay, now this Coco channel, left slant C, not on the top, repressed childhood and parental trouble and stress. Simple. This fellow is a very good fashion industry के हैं, बहुत बड़े Coco model, इनके ब्रांड चलते हैं Coco channel. Charles de Gaulle. This fellow is again a leader, very famous leader of France. The Charles C is as good as a looks like a I or J sort of thing. Then D is a very small letters, and Gaulle is, if you see, is a G, letter G is a misrepresented. G-A-U-L-L is basically upper जो गायब हो गया, and Y again it is a short closed loop. So thin and taller linear C with small vertical hook at top, wide connection. कॉले में E होना चाहिए, उन्होंने Y क्यों लिखा है? Y लिखा है, ये उनका पूरा नाम और भी देखना पड़ेगा, उतना मैंने रिसर्च नहीं किया, जो मेरे को मिला मैंने उसी पर रिसर्च कर रहा हूँ. मैंने ज्यादा रिसर्च नहीं किया, बट दिस इज द ऑथेंटिक सिग्नेचर. मे बी फ्रेंच में जो है वो वाई आता हो उसमें, because he is from the France. So this second name, wide connection in the second name. First name में कुछ short connection है, आप देखिए इसमें. And surname जो connections हो रहे हैं, angular connection है, and the connection is little wider. दोनों में जो स्टार्टिंग स्ट्रोक जो हुक जैसा लिया है, दोनों का सेम है. C और G में द गोल के गोल का जो G है इसमें, और फर्स्ट दोनों का जो आपको हुक जैसा दिख रहा है स्टार्टिंग में,
हाँ वो स्ट्रेस है बेसिकली, वो बेसिकली हुक्स और जहाँ आ रहा है वो स्ट्रेस है, टेंशन है. सो मोर डिसाइडिंग मैस्कुलाइन डायरेक्ट एक्शन ओरिएंटेशन, inherited social concern, spend effort to maintain relation, and the baseline high जा रहा है, ascending है, तो set high goals, high and the connections जो है ज्यादा है, तो connections wider है, तो he spend lot of effort to maintain relations and control action. इसमें जो पेन फ्लिक नहीं है, पेन स्टॉप है इसमें, आप देखिए जो पेन जहाँ स्टॉप होता है पतला बारीक नहीं होता. आर्टिस्ट को बेबी का है, जी का, जिसके अंदर से जो आ रहा है. मैम आपकी आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ थोड़ा सुनाई ठीक नहीं दे रहा, पीछे बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा है. आपके यहाँ कुछ टीवी चल रहा है, क्या चल रहा है कुछ, या कोई लाइट चल रही हो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब वाले वाला है, वो उससे पीछे सुनाई नहीं देता आपकी आवाज. सर जी का थोड़ा सा जो ओवल है वो थोड़ा सा जो ब्रेक हो गया है उसके बारे में बताइए. जी का ओवल भी है, अब देखिए सेम वे जैसे सी बनाया है वैसे डी का भी है. तो एक्चुअली दिस फेलो हैज अ लॉट ऑफ, इफ यू सी द वर्टिकल स्ट्रोक्स जो किसी भी लेटर्स में पहले लेटर में पहले आ रहा है, तो वो चर्च ओरिएंटेशन एंड उसका रहता है, अपना नेशन का रहता है, एंड दिस फेलो इज अ लीडर. तो डेफिनेटली नेशनलिज्म वगैरह चीजें हैं इसमें, तो ये चीज वहां पे रिफ्लेक्ट कर रही है. ये टेंशन है, बट फॉर नॉट फॉर हिमसेल्फ, फॉर people at large, people at large. दिस फेलो इज द लीडर. ये वर्ल्ड वॉर में इन्हें बहुत योगदान दिया है. और आप देखेंगे तो इसमें नीचे पूरा मिल जाएगा. जर्मनी एंड वर्ल्ड वॉर 2 में इन्हें लीड किया हुआ है, एंड फॉर हिज कंट्री. सो दिस इज व्हाट आप जो बोल रहे हैं, पतला सा हल्का सा ये जो एल शेप का है सी में और इधर में जा रहा है, दिस इज चर्च ओरिएंटेशन, but not to the Mother Teresa sort of thing or Mahatma Gandhi type. छोटा है, so it is limited to the his bosses and nations, limited to limited roles for big circle of his country and nation. सर अनुपमा जी पूछ रही है, लेटर जी में ऊपर में ही हुक भी है और इनिशियल स्ट्रोक भी है, उसका क्या मतलब है? तो हुक का वही मैं जो बता रहा था, जो नेशंस का जो है, जो हुक जो ये इनिशियल स्ट्रोक है, ये आपका जो फैमिली क्या बोलना चाहिए, मासेस के लिए, कॉमन मैन के लिए हेल्प करना विदाउट एनी पर्सनल बेनिफिट, वो है. और जो हुक है तो डेफिनेटली टेंशन है, बिकॉज वर्ल्ड वॉर में ये रहे, he leads the Germany in World War II. So this is this is basically the tension. So the stress, personal stress. He fought the World War II, French Republic. Okay, sir. Okay, and he helped ability to re-establish the democracy in France. So this is a very big task, and definitely it is a stressful task, basically. Calvin Coolidge. See with emphasis on upper zone with triangular knot. यहाँ पे जो नॉट बन रही है ट्रायंगुलर बन रही है, एंड एंगुलर कनेक्शंस इन सभी में, एंड नो पेन लिफ्ट. दिस टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ एनालिटिकल इंटेलेक्ट, ड्राइव, लीडरशिप, कंस्ट्रक्टिव रिजॉल्व. बिकॉज ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो रहता है कंस्ट्रक्शन का बताता है, बट एंगल होने से स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस भी होगा बट वो रिजॉल्व भी होते जाता है, बिकॉज टेक्स पेन इन डूइंग थिंग्स. बिकॉज जो कनेक्शंस हैं वो एंगुलर कनेक्शंस है, पॉइंटेड टॉप्स भी हैं एंड राउंड बॉटम्स है, बट पॉइंटेड टॉप्स है मिडिल जोन. तो दिस फेलो इज अ वेरी हैज अ वेरी हाई थर्स्ट ऑफ नॉलेज एंड स्ट्रेस
doing the things. सर ये वेवी माना जाएगा क्या, मतलब ह्यूमरस के लिए जैसे आपने बोला था? राइट राइट, वो माना जाएगा, वो भी माना जाएगा, बट अगेन इट इज नॉट, जो वेव पूरा नहीं है कंप्लीट, उसके बाद हाफ वेव तो है, बट उसके बाद फिर ये एंगुलर आ गया, सो ही इज अ ह्यूमर बट नॉट फुल्ली मैच्योर्ड ह्यूमर, बट हाफ वेव। तो सर सार्केज्म बोलेंगे या हार्श ह्यूमर या कैसा? हार्श ह्यूमर, ये दिस इज राइट वर्ड, हार्श, व्यंग्य जिसको बोला जाएगा, व्यंग्य, हास्य नहीं होगा, व्यंग्य होगा। हाँ, सार्केज्म, ओके सर। Chuck Berry. Again, here you see the loops जो हम कई लोग ने पूछा था, ये जो फ्लरिशमेंट बोलते हैं, ये है फ्लरिशमेंट, क्योंकि सी में ऊपर एक लूप है, सी के नीचे एक लूप है, दोनों लूप है, तो दिस इज कॉल्ड फ्लरिशमेंट। एंड बेरी का भी बी आप देखें, वो पूरा बहुत ज्यादा फ्लरिशमेंट है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो लेटर का फॉर्म नहीं कर रहा, बट इट इज एडिशनल एफर्ट, टाइम कंज्यूमिंग एंड एवरीथिंग। तो ऐसे बंदे रहते हैं जो शो ही ज्यादा रहते हैं, शोमैन टाइप के ज्यादा हो जाएंगे, because they want to show more, and definitely that show is again reconfirmed by the two eyes, human face. If they ensure they are visible in the public place. So lower zone, additional loops at upper and lower zone with extra. So it is the word basically plus human face. And if you see the Y has a phalanx claw, so they are phalanx claw means they are charmer, basically they attract opposite sex. And micromiddle zone means again that they have good intellect and they really work, and R is a flat top, so they enjoy challenges also. So if ये सब मिलाएंगे तो then you will find this fellow is a very good singer and very successful, because all these traits are helping his profession in a new scale and new dimensions. सर इनके वाई में थोड़ा सा गैप है, लूप ऊपर नहीं जा पाया है, तो बैलेंस क्ला है, लेकिन सर उन्होंने वाई में बनाने की कोशिश की है वापस से, फिर से बेरी का देखिए वाई ऊपर जा रहा है, बेसिकली उनका हुक लूप टूट गया है। लूप टूट गया। तो इसका क्या मतलब होगा सर? एक्चुअली ये बेसिकली वो लूप नहीं है, एक्चुअली क्रॉस किया हुआ है, एक्स क्रॉस नहीं, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, मैं उसको बड़ा करता हूँ, तो एक्चुअली वो फैलेंस क्ला ही है बेसिकली। ये देखिए, ये जो वो है अंडरस्कोर है बेसिकली जो हम अंडरस्कोर मारते हैं, वो है, वो वाई का फिनिशिंग स्ट्रोक नहीं है। जैसे अभी क्लियर हुआ आपको? यस। और सर बैरी का बी भी नीचे जा रहा है ना? जी नहीं, हाँ नीचे जा रहा है, बैरी का बी नीचे जा रहा है, तो वो अगेन एक्स्ट्रा फ्लरिशमेंट। तो इसका ये मतलब फादर है बेसिकली, उनके हो सकता है उनके हिस्ट्री बी में स्टेम नहीं है। हाँ जी, बी का स्टेम नहीं है। तो इनके जो फादर हैं उनका ये देखिए, born into middle class black family at in country, so उनका कुछ stay and early तो ये आपको हिस्ट्री में ये मिल जाएगा स्टैंड। सर अगर स्टेम नहीं है बी में तो उसका मीनिंग क्या होगा? हाँ, स्टेम मीन्स मदर है, मैं स्टेम पहला जो स्टेम का वो मदर कहलाता है, तो इनके जो पेरेंट्स में है मदर का, अब यहाँ पे इसमें आप देखेंगे आपको पता लग जाएगा। हाँ, मदर का जो ओके, इनका मदर के साथ का प्रॉब्लम होगा। हाँ राइट, पकड़ लिया मैंने वापस माइक। मदर के साथ प्रॉब्लम है, स्टेम नहीं, मदर, हाँ मदर के साथ स्टेम नहीं है तो मदर के साथ प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ये सी चक
Palahunik, ये जर्नलिस्ट हैं, राइटर भी हैं बहुत बड़े, एंड यू जस्ट सी इनकी खूबी देखिए, सी और पी को मिला दिया इन्हें, एस जैसे लग रहा है, बट इफ यू सी क्लोजली, सी बनाने के बाद सी के जहाँ एंड हो रहा है वहां से पी सेपरेट बनाया हुआ है, इट इज नॉट इन वन स्ट्रोक, इन्हें स्ट्रोक में ही बनाया हुआ है. And A is a very typical A, traditional sort of thing, but it looks like a D. P has a parabolic formation here, and here C also has a parabolic. Even the chuck K also has a parabolic. So this is basically Sir, 4 times, 5 times. So this is a overdo basically. So it is a negative. सर ये जो आपका PALA लिखा है, तो मतलब छोटे ए का क्लॉ है क्या वो? हाँ, छोटे ए का क्लॉ है बेसिकली, एंड जब ये पैराबोलिक ज्यादा हो जाएंगे तो एब्यूसिव सेक्सुअल रिलेशंस आ जाएंगे, बिहेवियर में आ जाएगा, वो सब चीजें नेगेटिव हो जाएगा. सर पी और सी इनिशियल्स जो मिले हुए हैं उसका क्या मतलब है? एक्चुअली ही वांट्स टू कनेक्ट द फैमिली, एंड फैमिली को लिंक करना बता रहा था. ही वांट्स स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्डिंग, ही वांट टू कनेक्ट विद himself with family basically, and family plays a very important role for his success. Family provides a basic infrastructure and support to grow as a for his personal growth basically. सर अनुपमा जी पूछ रही हैं कि डॉट एट द जॉइंट ऑफ सी और पी है क्या? हाँ, डॉट है उसमें, सी और पी के डॉट में, देखिए ध्यान से देखेंगे तो पता लिख जाएगा. बिल्कुल. तो उसका क्या मतलब है सर? है थोड़ा मतलब पेस्टोसिटी के जैसा है ना वो? नहीं, पेस्टोसिटी नहीं है वो, बेसिकली एक्चुअली वो जब जॉइंट हो रहा है तो जॉइंट दिख रहा है, कनेक्शन है. ही वांट्स टू बी कनेक्ट विद द फैमिली, सिंपल. ही जस्ट वांट टू कनेक्ट विद फैमिली, ही डोंट वांट डिस्कनेक्ट विद द फैमिली. और अनुपमा जी एक और क्वेश्चन पूछ रही है, वो एंडिंग स्ट्रोक ऑफ की एक बार फिर से बता दीजिए. हाँ, एंडिंग स्ट्रोक में अगेन फेलो पैराबोलिक आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ के में भी फेलिक आ रहा है, एल का भी है, पी का भी है, इवन ए में भी फेलिक स्ट्रोक्स आ रहे हैं. सो दिस इज वेरी ओवरडू. सो दैट्स व्हाई दिस राइटर हैज अ बैड बिहेवियर, अब्यूसिव सेक्सुअल रिलेशंस. तो इनकी भी जो अच्छी चीजें हैं वो सब कचरा हो गए बेसिकली. सर क्लॉ जो होता है वो तो चाइल्डहुड अब्यूज भी बताता है ना, कि चाइल्डहुड बहुत अब्यूजिव था. नहीं, चाइल्डहुड के लिए तो आपको सी में देखिए, यहाँ ये टॉप में आ गया, यहाँ भी ये देखिए हुक बनाया एंड वेरी हैवी, सी का जो है, तो ये चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स भी है. ओके सर, थैंक यू. ओके सर, थोड़ा सा वॉल्यूम मतलब साइज कम करोगे, थोड़ा सा दिख नहीं रहा पूरा जितना भी है, सिर्फ सिग्नेचर. हाँ राइट, हाँ चलिए, अभी देखिए, हाँ अभी ठीक है. हाँ ठीक है. कॉरी बुकर, अब ये देखिए इनका दिस फेलो इज नाम नहीं दिख रहे सर मुझे, इनके जो सिग्नेचर उनके नाम दिखना चाहिए. हाँ बिल्कुल नहीं दिख रही. जो सी है बेसिकली, अब देखिए लीनियर स्ट्रोक में आ गया है और नॉट बन गया है, और वो देखिए वो लेफ्ट में जा रहा है नॉट, सी एंड बी का. उसके बाद वो जो है बहुत स्ट्रॉन्ग, वेरी हाई स्पीड से ड्राइव कर रहा है. तो जितने भी जो स्क्रिबलिंग स्ट्रोक होते हैं और इस टाइप के जो स्ट्रोक होते हैं, एज ए लाइन स्ट्रोक स्क्रिबलिंग होते हैं, ऐसे बंदे जो होते हैं सॉल्यूशन प्रोवाइडर होते हैं. तो दे डोंट वांट टू इंटीग्रिटी, बट दे जैसे पिन थ्रू दे, जैसे हम निडल थ्रू होके जाते हैं, माला के अंदर का जो धागा है बेसिकली, दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, दे सिंपली जस्ट गो पियर्सिंग थ्रू दी various aspect in life and happenings, and they provide the solution which is hidden basically.
एंड दिस फेलो इज अ वेरी गुड लॉयर एंड जज. सो जज का मतलब वही होता है कि वो जो भी हुआ है उसमें सोल्यूशन लेके निकलना है. तो दिस फेलो इज अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर. तो ये चीज इनमें क्लियरिटी आ रही है, क्योंकि जो घटनाएं और जज के सामने जो भी केस आते हैं वो तो सालों में बनते हैं, बट इनको एक मिनटों में या कुछ समय में पूरा का पूरा सोल्यूशन देना होता है एक के बाद दूसरे के. सो they have that mental of not indulging into the action but going through and connecting each and every activities and give the solutions. So this is what the thing, and for that they require a higher intelligence. So definitely the middle zone to hai scribble hoke pura ek line mein ja raha hai. So this is again reconfirming the same profession in this. And वो जो लाइन भी जा रही है, लाइन भी बेस लाइन में नहीं है, वो अप इन हायर्स में जा रही है. सो जो सोल्यूशन है वो इंटेलेक्चुअल है बेसिकली, नॉट practical or sort of constructive solution. It is intellectual basically. Check Lorry. C and stroke just crossed start point. तो जो C का जो स्टार्टिंग स्ट्रोक है एंड स्ट्रोक दोनों मिल गया बेसिकली, एंड फॉर्मिंग ए इनवर्ट ट्रायंगल. जो ट्रायंगल ही बन रहा है वो नीचे, बोलिए. जो बुकर में प्रीवियस सिग्नेचर में बुकर में बी का जो पेस्टोसिटी है स्ट्रॉन्ग सेम है, उसका क्या मीनिंग होगा? बुकर में, हाँ ये बुकर तो बी बुकर तो फैमिली है, फैमिली में और रिट्रेस्ड है. मतलब ये इस जो फैमिली से आते हैं वो बहुत ट्रेडिशनल एंड डिसिप्लिन फैमिली होगी, और वो बी पूरा बनने के बाद वहीं से निकल रहा है, बट उसमें कोई टेंशन एंड हुक्स वगैरह नहीं आ रहे हैं उसमें. थैंक यू सर. ठीक है, ठीक है. So the C letter becomes a inverted triangle because जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं से खत्म हो रहा है, तो वहाँ पे और एंगुलर जो C का इनिशियल स्ट्रोक का लीनियर लाइन है, linearity ज्यादा है इसमें, circularity कम है. So he is a more masculine set of thing and leading to form a larger second letter. जो H है वो ज्यादा हो रहा है, तो जो H का हाइट, जो पहले लेटर का हाइट होता है PPI का, हमेशा सबसे बड़ा होता है, उससे बड़े लेटर्स बाकी नहीं होना चाहिए. अगर कोई लेटर उससे ज्यादा बड़े हो रहे हैं, इट मीन्स इट गोज आउट ऑफ प्रोपोर्शन and that is reflecting the struggle basically. So whenever the letter size goes beyond first letter basically, so it shows that things of a writer goes beyond his control. सर सी जो ट्रायंगल बना रहा है उसका कोई स्पेशल मीनिंग है क्या? उसका मीनिंग वही है, रॉन्ग रोल मॉडल. इनके जो है ये वही पहले इसमें ही लिखा है, मैंने सीरीज में ही दिया है. जो मैं जो भी एनालिसिस देता हूँ सब सीक्वेंशियली देता हूँ. तो जो जैसे सी जो है, सी नहीं दिख रहा है, वो ओ दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है, तो रॉन्ग रोल मॉडल. हाई एनर्जी फॉर स्ट्रगल टू कंट्रोल द थिंग्स इन हैंड एंड देयर इज अ. हाँ जी, बुकर में रिवेंज लिखा है लास्ट में, उसका क्या रीडिंग है सर? बुकर में, बुकर में कंट्रोल एज वेल. हाँ रिवेंज तो वही है ना, पेनफ्लिक है ना, पेनफ्लिक है बी का. बी में देखिए पॉइंटेड है, जबकि पहला वाले स्ट्रोक में पेन स्टॉप है, दूसरे वाले में पेनफ्लिक है, वो रिवेंज है. ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है ना. चलिए अनुपमा जी, आपके जब बोलते हैं ना तो पीछे से भाव भाव आवाज गूंजती है बहुत, उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आती. यहाँ पर पूरा कमरा शांत. पता नहीं क्या है. कोई आप कंप्यूटर बदलिए, दूसरा वाला अच्छा वाला लीजिए, महंगा वाला. अच्छा ये देखो, तो रॉन्ग रोल मॉडल हो गया. एंड जो इनकी जो स्पीड आप देखें ना, पेन प्रेशर सडनली कम हो रहा है, तो इट मीन्स देयर इज अ फ्लो इज नॉट 100%. So blood flow related health issues, affinity to and this is due to his drug addiction and alcohol. Because of alcohol, the flow of blood is not
carrying, and it may be the blood has a lot of water content. So, and because of that, these things are shown in the speed here. Okay. Conrad Hilton. Okay. So the loop at C again very, देखिए बहुत मिडिल जोन डोमिनेंट लेटर है. So this fellow is a business people. तो बहुत हार्श नहीं होते हैं, बहुत जैसे हमारे यहाँ के जब लाला लोग आपने देखा ना, बहुत तेज नहीं बोलेंगे, गुस्सा नहीं लेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, ज्यादा इंटेलेक्ट भी नहीं बताते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको मालूम है कैसे काम निकालना है. तो मिडिल जोन डोमिनेंस होता है. तो दिस फेलो हैज अ लॉट ऑफ मिडिल जोन. and the T cross bar width is very high, at least 3, not very high, 3 letter width. So it is a leadership. So this fellow is a very good businessman, has a mother influence, natural love to take care and share person with modesty, practical approach. Father related issues है, क्योंकि वही जो लूप बन गया है यहाँ पे और हल्का सा टिक जा रहा है because of that. Very demanding, high and low situation in life. Sir, high and low कैसे बता रहे हैं? हाँ, very demanding because this fellow has a middle. देखो बिजनेस में जो भी ऊपर नीचे होते हैं, this fellow is he doesn't want to compromise his practical in hand things, so he maintains that way. And वो जो very demanding means वही again जो T cross bar आप देखिए ज्यादा है, पेन प्रेशर ज्यादा है, कनेक्शंस अच्छे हैं, स्क्वेरिश लेटर्स हैं. So this is all the whatever situation he maintains his business at running level. That is what the high and low situation in life, very demanding. And same thing आप ये रेड में जितना मार्क है आप पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा. He went to buy and build hotels through Texas and all. So ये प्रैक्टिकल जो भी हाई एंड लो चीजें आती हैं, जब भी दिक्कतें गई मार्केट में, इनने नए नए होटल शुरू किए, पुराने बीमार होटल्स को लेना शुरू किया. And this Hilton is a very famous for Hilton series of hotels. So that is what this fellow is a very demanding in high and low situation. और high and low situation में ही इनने नए नए होटल खरीदे हैं और उनको कन्वर्ट कर दिए. नए नए मतलब क्या बोलना चाहिए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज खरीद ली, कई बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीद ली, बंगले या महल ले लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया होटल में. So this is what the basically the trait of this person. And you have a more clarity when you read this red mark history. Eventually regain the his remaining 8 hotels. ये इनके साथ दिक्कत भी, इनकी होटल भी बिक गई, बहुत सड़क पे भी आ गए थे. Still he fights and overcome the situation. Charles Lindbergh. देखिए इनका देखिए अपर जोन जो है प्रोमिनेंस ज्यादा है. तो ऐसे बंदे लोग जिराफ पर्सनैलिटी कहलाते हैं, जो ऊपर से ज्यादा दिखते हैं. एंड डेफिनेटली जो ऊपर से जिराफ जो है चीजों को ऊपर से ज्यादा दिखता है. एंड सेम थिंग इफ यू सी दिस फेलो इज अ वेरी गुड एविएटर, मींस मिलिट्री ऑफिसर हैं तो एरोप्लेन चलाते हैं. सो द सेम थिंग इज रिफ्लेक्टिंग हियर. एंड एरोप्लेन चलाने के लिए डेफिनेटली आपको नॉलेज लेवल अच्छा चाहिए एंड कंट्रोल अच्छा चाहिए. तो जो कंट्रोल है, मिडिल जोन के साइज है, कंट्रोल हो रहे हैं, हे वायर नहीं हो रहे हैं. ठीक है बट इनकी ज्यादा हिस्ट्री, हाँ ज्यादा हिस्ट्री है. लोअर जोन जो है सर, लोअर जोन जो है वो बहुत नैरो है, तो उसके लिए क्या नॉट ट्रस्टिंग पीपल. Not he is not interested in the basically building things and all. Basically he wants to enjoy practical, and जो कहाँ से आ रहा है क्यों आ रहा है उससे उनको मतलब नहीं है. and they don't even जो G आप देखें इनका squeeze G है. So he wants to overcome very fast. He doesn't want to indulge in the wealth and libido related things. He wants to fly physically in practical life as well as professional life. That's it. But इनका ज्यादा डिटेल नहीं है, तो मैं
हम इसको बाईपास करेंगे। सर इनका Okay, एल में एक्सिंग हो रहा है सर, हाँ इनका एल में एक्सिंग हो रहा है, किसमें? एल एल लिंडबर्ग में। हाँ लिंडबर्ग वो क्रॉस हो रहा है, तो ये फादर रिलेटेड या ये जो फैमिली है फैमिली रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है उसमें एक्स क्लियर दिख रहा है इसमें। अब ये इनका मेरे पास ज्यादा डाटा नहीं था तो इसलिए मैं ज्यादा इस पर हम बात नहीं करते, आगे बढ़ेंगे। आप लोग के लिए ये काम है बहुत ज्यादा, जो मैंने छोड़ के रखा है उसका हिस्ट्री देखिए और उसको कनेक्ट करके फिर एनालाइज करिए। मोटा मोटा मैंने बता दिया। सेस्क फैब्रिगेस, अब ये फुटबॉल प्लेयर है। अब यहाँ का इनका सी देखिए बिल्कुल अगेन वर्टिकल है एंड वेरी शार्प बैंड अपर हुक है। एक्सटेंडेड जो एक्सटेंशन है सी का फिनिश स्ट्रोक है बहुत एक्सटेंडेड है, बहुत ज्यादा है, मतलब सेकंड कंपेयर करेंगे तो 3 या 4 लेटर विड्थ का है एंड वेरी टाइट पैक्ड लेटर्स है। फुल नेम लिमिटेड टू इनिशियल्स, सो एंड असेंडिंग बेसलाइन 45 डिग्री करीब है। दिस ट्रांसलेट इनटू पेरेंटल ग्रज, वही है जो ग्रज आ गया इसमें, जो शार्प बैंड आ गया तो पेरेंटल ग्रज। ओवर थिंकिंग ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन, ट्राई टू कॉम्पीट थिंग्स इन मिनिमल एफर्ट्स एंड सेट हाई गोल्स, क्योंकि डिटेलिंग ज्यादा नहीं है तो ही वांट्स टू डू द थिंग्स फास्ट। अगर हम इनकी स्टाइल देखेंगे तो छोटे छोटे पास कम देंगे, सीधे सीधे भागेंगे या हिट जो है बहुत ज्यादा दूर करेंगे। सो दिस इज हाउ द your personality traits converted into the signatures. Carl Linnaeus is a very famous scientist. See finishing stores goes back again, back जाके hook बन रहा है, cutting at the lower zone with sharp angle, and again then it moves to make the further strokes Carl, and middle zone is very prominent. If you see this middle zone is very prominent. So this fellow is loving about the environment, plant and animals. So he's a very good scientist which deals in the plants and animal with more focus and intelligence. It relates with practical and intelligent with creativity. So he's a scientist, but having dealing with the plants and animals. So and they are the more physical sort of thing. So Sir, no more plants and animals क्यों बोल रहे हैं? इनकी disconnected letters है इसलिए क्या? No, middle zone जो है प्रैक्टिकल है बेसिकली, उसमें एनालिटिकल फॉर्मूलाज नहीं है, उसमें थ्योरीज नहीं है बेसिकली। ओके सर, ठीक है ना। मिडिल जोन छोटे हो जाएंगे तो उसमें थ्योरी फॉर्मूलाज एंड थ्योरीज आएंगी बहुत सारी, इसमें थ्योरी नहीं है, ऑल प्रैक्टिकल। सो साइंटिस्ट हैं एंड बट साइंटिस्ट है प्लांट एंड एनिमल्स की। सर हुक है जो एल में स्टार्टिंग में, हाँ। एल में जो हुक है वो, हाँ, दिस इज व्हाट अ डीप कंसर्न अबाउट एनवायरनमेंट। बेसिकली अगेन ये जो जा रहे हैं ये खुद को इनको हिट कर रहा है। सो एक्चुअली ही इज कंसर्न, ये सेबोटाज कर रहे हैं एल खुद में को। जो राइट, सी को ही सर एल नीचे भी हुक है सर, नीचे एल में नीचे है हुक। ये बहुत छोटा टाइनी हो गया, बहुत टाइनी हो गया। कार्ल में भी अगेन ये हुक, हाँ एक्चुअली ये इट इज अ पार्ट ऑफ एल। जैसे आप दूसरा भी एल देखें आप, उसका बहुत बड़ा है, इनका छोटा है, यहाँ पे छोटा है। तो इट इज नॉट it is he is not satisfied, he is not able to give the things what he plans basically, तो unfulfilled है basically, things are जो करना चाह रहे थे वो पूरी नहीं हुई। इसलिए आप इवन आप देखें इनका जो कार का फर्स्ट नेम के जो लेटर साइज है बड़े हैं कंपेयर टू सेकंड नेम के मिडिल जोन लेटर्स कंपेरेटिवली छोटे हैं थोड़े से सेम नेम में। तो इनका जो स्ट्रगल है पर्सनल स्ट्रगल ज्यादा है, फैमिली के लिए उतना स्ट्रगल नहीं है, इसलिए एल भी पूरा है, वो लेटर्स भी राउंडेड है, छोटे हैं जो विदिन। सर सेकंड एल जो है उसमें नॉट है ना? नॉट तो छोटा, इनिशियल छोटा सा नॉट है, ज्यादा बड़ा नॉट। इट इज स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉट वेरी हॉन्टिंग एंड प्रॉब्लम मेकिंग, वैसा नहीं है, वेरी स्मॉल नॉट। एंड हुक यहाँ पे एल का फिनिश में भी आप पार्शियल हुक है, तो इट इज अ टेनासिटी बट नॉट अ स्ट्रेस बेसिकली।
He's a very famous botanist, geologist, and taxonomist. Physician who is formalized binomial and nomenclature. जितने भी आपको जो बॉटनी के नाम होते हैं, उनकी जो फिलॉसफी इन्हीं ने बनाई थी. Cornelius Vanderbilt. He is a businessman. Again, जो अंडर स्कोर है बेसिकली लोअर जो रिसोर्सेज का है उसको क्लोज करके रखते हैं हमेशा. ये देखिए यहाँ पे लीडरशिप के लिए टी क्रॉस बार अच्छा है. सो इनिशियल टॉप पैराबोलिक लूप ऑन द लेफ्ट, बट इट इज पैराबोलिक लूप है, बट वो एक हार्ट शेप फॉर्म कर रहा है. इन इनिशियल पैराबोलिक लूप एट वी में भी आप देखिए इनिशियल पैराबोलिक लूप आ रहा है इसमें. यहाँ पे 3 लेटर विथ टी क्रॉस बार है. अंडरस्कोर एंड इन क्लोज लूप. दिस ट्रांसलेट इनटू इनहेरिटेड क्रिएटिविटी, परपेचुअल एनर्जी, इनबिल्ट लीडरशिप, मनी rerouted instead of training. So he wants to reinvest the things to have a business more flourishing. Chris Evert. अगेन इनमें जो एच है ऊपर जा रहा है, एक्सटेंशन ज्यादा हो जा रहा है, और वो लूप ज्यादा है. तो ही इज बेसिकली मेंटल जो है थोड़ा सा ईगोटिस्ट हो रहा है. इनकी जो तो सी एंड स्ट्रोक एक्सटेंशन है द इनिशियल स्ट्रोक ऑफ आर विद बिगर साइज. This shows social concern outgoes beyond the limit. Uncompromising image, spendthrift, not ready to agree to routine normal things, futuristic decision, and maladjusted. Maladjusted इसलिए आप देखिए, आप जो C के बाद H छोटा हो गया, R कैपिटल हो गया, फिर छोटा हो गया, देन जो लेटर्स है कंपेरेटिवली इनके जो कनेक्शंस है इससे डबल कनेक्शंस एवर्ट में. सो दिस फेलो इज नॉट एबल टू एडजस्ट द सेम वे विथ एज ए पर्सन एंड एज इन फैमिली. सो because of that there is a maladjustment. Now you can see maladjustment. Evert left Mill to marry her third husband, Australian golfer and all. If you see this red mark history, you will find those whatever things is explained here, it is in detail. Chaka Khan. She is a singer. Again here the H outgoes basically here, same way as above. Though that's why this is my analysis is only same to here. The H is again same here, same with Chaka. Charles Babbage. Charles Babbage is basically, if you see, the inventor of mechanical computer. The first computer mechanical he has invented, and basically he is basically the forward slant is very high, so he's driven by emotions, and that is the emotion is very self-driven sort of thing. And this is the basic thing of doing some invention, what he thought विथ क्लैरिटी. तो उसमें देखिए जो मैकेनिकल जब कंप्यूटर था उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पुर्जे बना के लोहे का कंप्यूटर बनाया हुआ था जो पहला जो कंप्यूटर था. तो उसमें क्लैरिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी बड़ी होना चाहिए, एंड यू हैव टू ड्राइव सेल्फ ड्रिवन होना चाहिए. ऑल दोस थिंग्स आर reflected with the forward slant, legibility, connections, and there is no loop. The stem is has no loop. So this is what inherited intellect, energy, creativity of social cause, open mouth, religious parents helps 2 step further, क्योंकि connection end stroke ज्यादा जा रहा है, and यहाँ पे initial stroke भी है, तो initial, so it is the inborn or inherited skills. C का भी again रिलीजियस पेरेंट्स किससे पता चल रहा है? अभी ये इसमें जो बेबेज जो है, चार्ल्स बेबेज जो है, बी का जो आप ये जो डंडी है बड़ी वाली डंडी इनिशियल स्ट्रोक, इससे पता लग रहा है. ये मदर टेरेसा एंड महात्मा गांधी में मिलेगा आपको. ये एक्स्ट्रा एक्चुअली इनिशियल स्ट्रोक की
अगर निकाल भी है तो भी बी आपको दिखेगा. दिस इज व्हाट द इनिशियल स्ट्रोक्स. बी विथ वर्टिकल स्टेम ऑन लेफ्ट, ये लिखा हुआ है. बी विथ द इनिशियल वर्टिकल स्टेम ऑन द लेफ्ट. दिस इज व्हाट द सर लेटर भी ओपन है फ्रॉम डाउन, कंप्लीटली ओपन है, टोटली ओपन है. हाँ. सो ये फादर, तो ये स्टेम जो है ऐसा हो गया, और स्टेम टोटली बॉटम, तो ये फादर से अवे रह रहे हैं बेसिकली. ही इज अवे फ्रॉम फादर, मे बी स्टडी के लिए या व्हाटएवर, या फादर नहीं रहे. लेटर सी में तो नीचे का स्ट्रोक अंदर जा रहा है, अंदर की तरफ लेटर सी जा रहा है. हाँ, ये सोशल कंसर्न तो है उनके पास, बट इट इज ये हुक फॉर्म कर रहा है. सो जो सोशल कंसर्न है वो क्रिएट, और उसमें जो पैराबोलिक स्ट्रोक बन के नीचे जा रहा है वो नेगेटिव नहीं जा रहा. तो इट मींस जो सोशल कंसर्न है उसको क्रिएटिव तरीके से इन्हें रिजॉल्व किया है. उससे हिट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जो हुक जा रहा है नीचे उनको कहीं कट नहीं कर रहा. So this is what the creativity, the energy is converted into more construction and happiness rather than negative traits. Sibylline Shepherd. Again, C as a S. Same जो हमने पहले किया था, इसका एक राइटर थे, उनका भी सी सेम टाइप का था. Moves down in the lower zone, forming partial Y letters. S end stroke is short closed with falling baseline. It means to choose wrong role model in life, social concern, libido driven, and societal baseline. Because if you see that it is the baseline is just convex, and the letters again parting away with the forward slants. So this is societal baseline, and you can see all those things reconfirmed by in the red string. कैसे कासम is a media personality, रेडियो जॉकी. तो जॉकी जो होते हैं बेसिकली ओरेटरी स्किल अच्छे होते हैं. तो पहला लेटर डेफिनेटली साइज सबसे बड़ा है, देख लीजिए उसमें. Then radio jockey has to basically go away with the masses feeling, and also जो C का जो है वो डाउन स्ट्रोक में जा रहा है बेसिकली. ठीक है. So he is more caring, sharing, over concerned about social environment with sinking feeling. Sinking वही डाउन जा रहा है, इसलिए sinking feeling हो गया. Stressful father relation, क्योंकि ऊपर टॉप में जो हुक आ गया है, इसके लिए stressful father relations हैं. Heavily invested with ट्रबल्स एसोसिएटेड, बिकॉज जो वाई है मनी बैग होता है, उसमें ट्रायंगल बना के हुक बन रहा है यहाँ पे. सो लॉट ऑफ ट्रबल्स इन द इन्वेस्टमेंट. सो दिस इज व्हाट. ओके, विद दिस आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड. सर इनका के के बारे में कुछ बताइए. इनका जो के है कासिम का जो के है, बहुत सारे हुक्स है, ऊपर नीचे हर जगह हुक है. हाँ, तो ये देखिए के का जो बेसिकली हुक है अगेंस्ट, जो ये हुक जो है एंगुलर फॉर्म है और स्टेम के पीछे जा रहा है. तो ये इनने जो मैरिज जो रिलेशंस वगैरह होंगे इसमें, उसमें स्ट्रेस है बेसिकली. एंड कैसम इज फादर आल्सो, रिफ्लेक्टिंग द फैमिली नेम. तो उसमें भी हुक्स हैं. तो इनके पेरेंट्स के साथ और इनकी वाइफ के साथ, दोनों के साथ इनके स्ट्रेस होगा. स्ट्रेसफुल फादर रिलेशन होगा. सर इनका के का जो सेकंड स्ट्रोक है ना, जैसे एक फुट स्टेप अहेड रख रहे हैं, ऐसा राइट दिख रहा है. आगे बढ़ रहा. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टांग जैसे लग रहा है, टांग एक हाँ आगे चलते हुए चल रहा. तो इसका क्या रीडिंग होगा सर? इसका रीडिंग यही है, जो के का जो सेकंड स्ट्रोक होता है, जो आप जो अपोजिट सेक्स है जो वो उसके लिए, तो वो जो इसमें लीनियरिटी है, और ऊपर का जो स्ट्रोक आ रहा है कर्व आ रहा है. इट मींस जो प्रपोज कर रहा है वो सॉफ्ट फीलिंग है, बट वाइफ जो जा रही है, वाइफ वो टिक जैसे ले रहा है और लीनियर है. तो वाइफ मोर मेल डोमिनेंट, मेल टाइप की होंगी इनकी वाइफ जो होंगी. अब वो अगेन आपको हिस्ट्री में जाके चेक करके स्टोरी कंफर्म करना पड़ेगा. तो वाइफ वेरी हार्ड एंड हार्श रिलेशंस होगा उनका. तो उनका जो बिहेवियर होगा थोड़ा सा हार्श होगा, क्योंकि लीनियर है, एंड उसके साथ हुक भी पॉइंटेड भी आ रहा है. तो दैट कंफर्म्स बेसिकली. थैंक यू सर. चलिए.
So I think with this, we end with the signature series. Hope you will like. Please give your Yes, sir. comments as well बहुत as बढ़िया। doubts in signature series. बहुत अच्छा सेशन रहा। हाँ जी, हाँ जी, चलिए। थैंक यू सो Thank मच you, सर, बहुत ही sir. अच्छा नॉलेजेबल Thank you. वीडियो। हाँ जी, Thank you, अच्छा Bhavna ये and all everyone. Thank Thank you. you very much. थैंक यू। अच्छा ये बताइए, लेटर डी के लिए हम क्या 1 हफ्ते में रखें, 10 में रखें? उसका डॉक्यूमेंट तो तैयार है सर थोड़ा सर गैप बताइए। एक रखिए वीक रुक जाते हैं। हाँ, सर, ये 1 वीक तो मिनिमम गैप रखते हैं, रखिए। ये वो तो मिनिमम रखना ही पड़ता है मेरे को, क्योंकि लोगों को सर बताना भी नेक्स्ट होता संडे है। लीजिए, नेक्स्ट नॉट संडे, दिस हाँ कमिंग वन बट द नेक्स्ट संडे आप रख सकते हैं। हाँ हाँ, 10 दिन के बाद मैं रखता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, Thank you. बताऊंगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट। बाय बाय।